कि प्रैक्टिस करते हैं स्ट्राइक पे। देखिए यहाँ पे सिंपली गिवन है, यहाँ पे ड्राइंग एंड देन आइसोमेट्रिक फ्रंट व्यू एंड देन साइड व्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। टोटल इसकी हाइट है वो 70 एंड देन मैं यहाँ पे सॉलिडवर्क्स स्क्रीन पे आता हूँ। फ्रंट प्लेन लूंगा मैं इसके लिए, ठीक है, और प्लेन वाइट से यहाँ से बनाएंगे। देन अगेन मैं यहाँ पे लेता हूँ सेंटर लाइन एंड देन ठीक है ड्रॉ इट। नाउ टेक स्पेसिफाइड डायमेंशन 70, ठीक है, यहाँ 70 मैंने स्पेसिफाई कर दिया इसको। ओके, देन अगेन यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे 20 एंड देन 20। ओके, मैं यहाँ से लेता हूँ मिड लाइन एंड इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 20। देन अगेन मैं मिड लाइन लूंगा यहाँ पे एंड देन सेम ड्रॉ करेंगे इसको भी 20 का। टेक स्मार्ट डायमेंशंस एंड स्पेसिफाई द डायमेंशन 20 एंड 20, or you can also add the relation equal relation. Take arc 3-point arc and specify the point and give the direction. Now select it again 3-point arc and specify the starting and end point and radius. Okay, now select it and take a smart dimension, specify the radius 65. Okay, next यहाँ भी इसमें भी 65 इसकी रेडियस यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे हम। ओके, नाउ स्केच इज फुली डिफाइंड। देन अगेन देखिए यहाँ पे इसमें स्लॉट है, स्लॉट को ड्रॉ करेंगे अभी यहाँ पे एंड यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ मैं इसमें। ऑफसेट लेंगे हम यहाँ पे 2 का ऑफसेट और वाई डायरेक्शनल लेंगे इसको एंड सेंटर लाइन। ओके, देन अगेन ड्रॉ दिस सर्कल। ओके, now take a smart dimension and specify the diameter which is 8. Okay, which is 8. Okay, now take a smart dimension and specify the distance 20. Okay, now center distance 30. And select the circle and this circle or specify the relation equal. Okay, now take power trim and trim these lines. Now okay, then ये ड्रॉ हो गया यहाँ पे। राइट क्लिक एक्सट्रूडेड बॉस फेस एंड सेलेक्ट द कंटूर एंड डिलीट इट और द बॉस फेस इज 10 एंड नाउ ओके। सो आई होप कि क्लियर हुआ हो। ठीक है, ये 10 है एंड देन 5 एंड देन ड्रॉ द सर्कल हैविंग 8 and 12 diameter and 7 or 56 distance. Now select this face and sketch, right click, take circle and draw it. Okay, now take smart dimensions and specify the diameter 12. Now take again circle and specify the diameter 8. Okay, now then again specify the center and at the relation select this circle and the circle, hold the control key and make equal. Now select the circle and the circle, hold the control key and make relation equal. Okay, now take a smart dimensions and specify the distance from the horizontal is 7 and now center to center distance is 56. Okay, 56. Now hold and select the and make vertical. ठीक है, and now make these also vertical. Okay, now sketch is fully defined. Right click, extruded boss face and the boss face हमें देना है सिर्फ 5
एंड ओके। आई होप कि क्लियर हुआ हो। देन यहाँ पे थ्रू आउट दी होल करना है, सेलेक्ट द फेस एंड स्केच एंड कन्वर्ट एंटिटीज एंड कन्वर्ट दिस सर्कल इनटू एंटिटीज एंड नाउ ओके। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट एंड एक्सट्रूडेड कट कीजिए यहाँ पे थ्रू ऑल ओके। ठीक है, ये होल हो गया यहाँ पे थ्रू ऑल एंड नाउ सेलेक्ट दिस फेस एंड यहाँ पे appearance part and specify a color okay, then file and save the model and now file again and make drawing from part okay. Browse, select a standard sheet okay, and now drawing model and don't left click on it और preview यहाँ से ऑन कीजिए इसका, और मैं इसमें यहाँ पे देखिए इसमें शो करता हूँ इसमें। देन यहाँ पे इसका साइड व्यू ओके, एंड देन आइसोमेट्रिक व्यू शेडेड विद एज ओके, इसमें शो करेंगे। क्लिक और यहाँ से आप साइज इंक्रीज कर लीजिए 2:1 ओके, ये साइज इसका ठीक है। एंड देन इसको यहाँ पे शो कीजिए सर एंड यहाँ पे देते हैं एंड नाउ डायमेंशंस लगाएंगे। एनोटेशन मॉडल आइटम यहाँ पे चूज कीजिए इंटायर मॉडल एंड import item into all views and then okay, or you can also add the annotations okay now okay। ठीक है, यहाँ पे जो डायमेंशन हमने स्पेसिफाई की है, डायमेंशन दिए हैं वो सभी शो हुई है, जो शो नहीं हुई है वो हम विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट डायमेंशन यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 18 एंड देन ये 20 ओके। तो मैं यहाँ पे जो 56 है यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। नेक्स्ट क्या देखिए एंड सेलेक्ट द फेस एंड स्केच और दिस राइट क्लिक एंड अलाइन वर्टिकल ओके। ठीक है, नाउ इसको यही रहने दीजिए एंड इस 2 को सेट करेंगे थोड़ा हम यहाँ 2 और 2 यहाँ 65 डायमीटर ऑफ रेडियस सॉरी एंड देन ओके, or you can also select this and hold the control key and select the dimension, right click and यहाँ पे align horizontal। ठीक है, तो ये align हो जाएंगे यहाँ पे horizontal। so I hope कि clear हुआ हो। next part इसमें file and then save as type यहाँ पे choose कीजिए Adobe Portable Document Format PDF and then save it। ये PDF जनरेट कर देगा and print it। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन सॉलिडवर्क्स सीरीज को फॉलो करें। थैंक यू।